Hello everyone, this is your educator Aisha Rasheed and you are watching 7-Minute Tricks. In this video, we will discuss how you have to greet someone, the formal way, informal way and slang also to greet someone. So let's begin with. The first one is like, hi, how are you? Or you can say like, hello, how are you? And the other one is like, hey. Hey is for those people you already know, and or if you want to draw someone's attention, then also you can say hey listen, like you can say hey listen Anna, let's go to the party. So आप जिसको जानते हो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, you can say like hey. The other way is what's up. इसका मतलब होता है और सब कैसा चल रहा है, आप कैसे हैं. So it is like जो लोग usually इसका आंसर देते हैं बोलते हैं nothing much or not much. So you also have to say like if you are meeting someone, so what's up, so change yourself. अभी तक आप पूछते हो how are you, so change yourself. Now you start using all these phrases like how is life going, or you can say how is life. So if you're meeting someone for the first time, you should not say how is life. At that particular time you should ask that hi, how are you, because if you're meeting someone for the first time, you're not going to ask directly about their life. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क आप कैसे हैं, ये पूछोगे, उसके बाद धीरे कॉन्वर्जेशन के बाद पूछोगे हाउ इज लाइफ गोइंग. एंड द अदर थिंग इज लाइक यू कैन से नाइस टू सी यू या नाइस टू मीट यू. सो दीज कैजुअल ग्रीटिंग्स आर यूज विद फ्रेंड्स के साथ में या कोवर्कर्स के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में. यू कैन यूज दिस लाइक नाइस टू सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी, और या आप ये कह सकते हैं दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो और हर जगह इसका इस्तेमाल करना है. इट्स बीन अ वाइल. आप अगर बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हो, मीटिंग समवन बहुत दिनों बाद और लंबे समय के बाद, तो आप बोल सकते हो लॉन्ग टाइम नो सी, या आप बोल सकते हो इट्स बीन अ वाइल, जब हम लोग मिले थे. सो अब ना बात करते हैं बिजनेस ग्रीटिंग्स की या फॉर्मल की, और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, हाउ यू हैव टू ग्रीट समवन. फॉर एग्जांपल, यू हैव टू से गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, राइट. सो देयर यू डोंट हैव टू से हाय. So the formal way is like good morning, and do remember this thing क्योंकि usually इसमें लोग गलती करते हैं और आप लोगों ने भी शायद कभी ऐसी गलती करी हो. गुड मॉर्निंग की जगह पे आफ्टरनून और आफ्टरनून की जगह पे गुड मॉर्निंग. सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर एंटरिंग, जब आप एंट्री कर रहे हो रूम में, तो प्लीज चेक इट आउट. समय देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है या गुड इवनिंग बोलना है. या वन थिंग मोर, इफ यू आर मीटिंग समवन इवनिंग में अगर आप मिलते हो या रात के 10 बजे में मिल रहे हो, रात के 11 बजे में मिल रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव टू से गुड नाइट. इफ यू आर मीटिंग समवन, ऑलवेज डू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू से गुड इवनिंग. अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आपको क्या बोलना होता है, गुड इवनिंग बोलना होता है. नेक्स्ट इज लाइक प्लीज टू मीट यू, आप बोल सकते हो, ठीक है. दीज ग्रीटिंग्स आर फॉर्मल एंड पोलाइट. If you say this to someone when you meet him or her for the first time, it will make you seem courteous. My name is Kirti Patel. I am pleased to meet you. मतलब I am pleased to meet you. आपसे मिलके अच्छा लगा, right? अब बात करते हैं हम लोग कुछ slang की. Make sure slang कभी भी इंटरव्यूअर के सामने इस्तेमाल नहीं करना है. You can use this slang with your close ones, ठीक है. For example, how do you do? यहाँ पर लिखा howdy. इसका मतलब होता है how do you do. Like if you are asking your friend, now start using this. This is look quite stylish, right? How do you do? So you can say howdy, right? Or you can write in messages like howdy. Okay. The other way is good day, mate. Like the casual greetings in Australian abbreviation, that is का मतलब क्या होता है, good day, good day. So it is like when you are meeting someone, you can say like this, or you can type in your messages as well. Next is yo. इंटरव्यूअर के सामने कभी नहीं बोलना है. दीज आर स्लैंग वे ऑफ ग्रीटिंग समवन, स्पेशली वेरी क्लोज वंस. एंड द लास्ट इज लाइक हियर. हियर मतलब दीज ग्रीटिंग्स शॉर्ट फॉर हाउ आर यू, यू कैन राइट हियर, इज कॉमनली यूज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड में इसका इस्तेमाल करते हैं. और यू कैन यूज लाइक इन, ऑब्वियसली आई शुड नॉट गो फॉर्मल, दिस इज लाइक इनफॉर्मल एंड स्टार्ट यूजिंग हाउडी. सो इट इज लाइक व्हेन यू आर मीटिंग समवन, इट सीम्स क्वाइट स्टाइलिश. So start using it and make sure that when you are meeting interviewer or when you are exchanging greetings with interviewer, never ever say howdy or here, right? You always have to say good morning sir, good morning ma'am. So you should be like very formal when you are
meeting or you are exchanging greetings with interviewer. So this was all about today's session. So I hope so that you like the session. और सबसे ज़्यादा कौन सा खूबसूरत तरीका लगा है, write in the comment section. And yeah, if you are looking for subscription on India's largest platform, that is Unacademy, so how you have to take subscription is, first of all, you have to choose your goal. And once you choose your goal, for example, you are preparing for bank examination or SSC examination, you have to like bank SSC you will opt for. And then what you have to do, step 3 is like 6 months, 12 months or 24 months. And if, for example, if you're looking for 1 year, like 12 months, is there any discount running on? ये question मन में आता है. Yeah, if you are going to apply this referral code AISHA10, you will get at instant 10% discount. Yeah, this is like the other important thing. क्यों नहीं लेना है तो डिस्काउंट लगा के ही लेना है ना. सो इट इज़ लाइक दैट यू कैन यूज़ AISHA10 फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पर 2 years का लिया गया है. यहाँ पर आप लोग कुछ देख रहे होगे पॉइंट्स क्रेडिट लिखे हुए हैं. यार ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ और एनी अदर फैकल्टीज वीडियोज़ और अनअकैडमी लर्निंग ऐप, then there are certain points credited in your account, and while you take subscription you can redeem those points, right? So it is like that you can redeem over here, and if you're applying referral code AISHA10 you will get at instant 10% discount. So now you can see for 2 years you are getting like 5832. So if you're seriously preparing, then this is a time when you have to fasten your belt and get ready. Do like it and do share it and do write in the comment section आपको सबसे बेहतरीन कौन सा लगा. Thank you everybody for watching this session, and all the very best for your future endeavors. Keep learning, keep growing.